So work means force into displacement. If you are applying force on any body and it is responsible for displacement, then you will say ki you did some work. Example, if you have a body A with mass M, you exert some force on this body, F force, and because of this force, this body will move to B point. So you will say ki there is some displacement covered due to the force. The force responsible for the displacement is work and FD cos theta. Anvita, what is the meaning of this dot? It it means it is a dot product or scalar quantity, correct, Anvita? तो एक बार रिपीट करेंगे? मैं कुछ कर रही थी, सॉरी. So turn on your video. So I asked ki what is the meaning of dot between F and D? This dot. Dot So, means this quantity is dot product. Work yeah. is dot product. And whenever you use dot product, its simply meaning is it is a scalar quantity. Vector product means vector quantity. Dot product means scalar quantity. Example, torque is a vector quantity. How do we know? Because it is cross product. Sara is trying to join, but I think she have network issue. Sara, can you hear me? Yes, sir. Yeah. So make sure you make notes. We are just starting work. You were there in work, I guess, isn't it, Sara? Yes, sir. So, okay. Guys, example here we are doing dot product. Dot product है ये, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी. क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी. एग्जांपल टॉर्क P क्रॉस E 12th क्लास में दिया. This is given in 12th class electrostatic unit. Torque is equal to R cross F, rotation chapter. Force is equal to Q V cross B, magnetic field. L is equal to M R cross V, rotation chapter. Correct? All these are the cross product means vector quantity. All these four will be vector quantity. How do we know? Because cross product, vector quantity. Right? Vector quantity. काजल माइक म्यूट कर लेना एक बार. So why all these written? For your revision. Because you did this, torque is equal to P cross E. You did in the magnetism, force is equal to QVB sin theta, right? QVB sin theta. What are the other scalar quantity? Electric field, electric flux. Electric field will give you electric flux. So electric field is vector quantity, but dot product of electric field is scalar quantity. Somebody mic is on. काजल mic on है. So continue. Now remember, whenever we are applying some force, we want to see it should be in the direction of force. कि जब हमने force apply किया और displacement और force की direction same होनी चाहिए. Direction of the force and displacement should be same. Correct? So that's why when you are taking F, we will consider only F cos theta. Why? Because F cos theta direction is same as displacement. So F cos theta into D, Ft cos theta. This is the formula. Same formula we did here. Correct? So in dot product, you know A dot B is equal to AP cos theta. In cross product, A cross B is equal to AB sin theta. That's why if you remember, torque was equal to P cross E.
or P is sine theta. But in your energy, potential energy, it was minus PE cos theta. Why? Energy is scalar quantity. Energy is scalar quantity. We take force which is in the direction of the displacement. Okay. So unit force into displacement is work done. Force is equal to mass into acceleration according to Newton's second law. Mass unit is kg, acceleration meter per second square, and this is meter. So unit of work is joule or this. Kg is represented in the form of m. That's why this is m. Meter square is represented in the form of L, and second is represented in the form of time. So ml square t minus 2. Why I wrote this? This is the most popularly asked dimension unit. सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है. You should know two dimension unit. दो यूनिट का तो पता ही होना चाहिए. One force mlt minus 2 and second work ml square t minus 2. Very 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 popular. Then start. 10 star. Very very popular. Note it down. Dimension unit of force mlt minus 2, work ml square t minus 2. Even 2025 में भी same question पूछा. They ask exactly same question from the work unit or energy unit, because unit of work or energy is exactly same. Done. Work for the variable force. Whenever you multiply anything, you do integration. Example, if you take short work like small work done, then it is force into displacement. When you integrate from point P1 to point P2, from P1 to P2, from R1 to R2, you can do integration. This is work done for the variable force. Correct? This is the work done for the variable force. Force displacement graph. फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एक बार दोबारा रिपीट कर. बिल्कुल. कौन सा? ये वाला. यस सर. तो Nancy, we know short work done, like small work done, is equal to force into displacement. Correct? If you integrate both sides, integration of dw will be equal to w. So total work done, and this full value will give you work done. That's what we are saying. कि अगर इंटीग्रेशन करोगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का तो हमें वर्क डन मिल जाएगा. एनी डाउट निकित? सॉरी दिस नैन्सी. अब यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं व्हाट वी आर सेइंग कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट एरिया बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इट विल गिव यू वर्क डन. सिंपल रूल होता है. द सिंपलेस्ट रूल इज if you take slope of anything, you do differentiation. Example, if you take slope between displacement and time, if you take any graph of displacement and time, their division will give you slope, and this slope will give you velocity. Correct? But area will tell you integration. Yes. So Sonia? एक बार स्टेटमेंट अभी बोली स्लोप वाले में, प्लीज रिपीट दैट स्टेटमेंट वंस अगेन. हाँ श्योर प्राची. तो पूछ रही हो कि स्लोप और एरिया की स्टेटमेंट की बात कर रही हो ना? यस सर. हाँ. तो हम ये बोल रहे हैं कि whenever you take any slope, you divide one value from other. You divide y by x-axis, y-axis and x-axis. तो हमें पता है dx by dt क्या होता है? v. तो क्या हम बोल सकते हैं can we say that slope of displacement time graph will give you velocity? यस सर. If this is the situation, tell me what will be the slope
between the force and time. If you take force and time, तो इसका एरिया हमें क्या देगा? नॉट स्लोप, Sir, एरिया. it's area change in momentum or impulse. Exactly. Because when we calculate area, we multiply them. Force into time, and force into time is equal to impulse. Same यहाँ पे. Force and displacement multiplication is giving you work. So area under this will give you work. Any doubt? So one doubt, इसमें कोई एक डाउट है इसमें, अगर जैसे फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो इम्पल्स मिलता है, लेकिन x इंटू टी गिव्स अस नथिंग इन फिजिक्स, तो हम उसको नहीं देखते, फिर हम जैसे एरिया को देखेंगे, जैसे अलग अलग सिचुएशन में ऐसे होता है. बिल्कुल. ओके. तो जो भी relevant है, whatever is relevant, that will apply. Example, slope of dx by dt will give us velocity, so we use it. But area sir. of x into t give us nothing, so we don't use it. Yes sir. Okay sir. Correct? So work done can be three types. We know work done depend upon the three factors. What is the amount of force? What is the amount of displacement? And what is the angle? Correct? If your work done is positive, it means your angle should be between 0 to 90. Sorry, above 90. Correct? So what happened? Cos 0 value is 1. Cos 90 value is 0. And we are saying work done should be positive. So angle should lie between these two. More than 0 and less than 1. Correct? So this will be the positive value. That's why angle should be acute. So, but then it should not be more than 90, na? Acute is less than. Sorry. By mistake I said less than 90. Because cos 90 value is 0. तो cos 90 से अगर हम क्रॉस करेंगे then we'll get negative value. है ना? अगर एंगल 90 को हम क्रॉस कर देंगे, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, in that case work will be negative. Why? क्योंकि अपोजिट साइड हो जाए, एंड whatever thing happen in the opposite side, it is negative. जैसे कि example, if you take displacement is this side and force this side, so angle is more than 90 degree. यहाँ पे जो वर्क डन निकालोगे तो वर्क डन विल बी नेगेटिव. करेक्ट? जैसे फ्रिक्शन अपोज द डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है, फ्रिक्शन बैक साइड में लग रहा है, तो एंगल इज मोर देन 90, सो इन फ्रिक्शन वी हैव नेगेटिव वर्क डन. व्हेन यू अप्लाई ब्रेक, कार इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे जा रही है कार, बट वी नो वी आर अप्लाइंग फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, so angle is more than 90 degree. And work will be 0 if theta is 90, because cos 90 value is 0. When it is possible uniform velocity, circular motion में work 0 होता है, because displacement is 0. If you push the wall, displacement 0, क्योंकि मूव ही नहीं कर रही वॉल. यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर अगर हम देखेंगे सर्कुलर मोशन में, तो उस केस में भी क्या होगा? फोर्स एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 मीन्स फोर्स 0, फोर्स 0 मीन्स वर्क 0. करेक्ट? any rotation motion, because again displacement is 0. Any doubt? So we'll do this topic and then we'll solve question from PYQ. Frame of reference. Whatever you do in your life, everything depend upon the frame of reference. तुम मूव कर रहे हो या रेस्ट पे हो, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है. मैंने पहले भी बहुत एग्जांपल दिए कि अगर तुम अभी बैठे हुए हो, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन. काजल म्यूट हो अभी. हाँ, हाँ तो सर. मान लो यस अभी सर. तुम बैठी हुई हो, तो रेस्ट में हो या मोशन में हो? रेस्ट में सर. रेस्ट में. अब हम रेस्ट में है या मोशन में, इट ऑल डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस.
If I am observing you, you are in rest condition. But if I go outside the earth, then earth is rotating. It will look like all of you are rotating. So depend upon the frame of reference. अगर हम बस में बैठे हैं, person next to us look like in the rest condition. But if we are outside the bus, तो हमें क्या लगेगा? वो body move कर रही है. Make sense? All depend upon frame of reference. Who is observing? So I have a doubt. Yes, Pravachi. तो मुझे पूछना था कि जैसे ये स्टेटमेंट यहाँ पे एप्लीकेबल होगी कि रिलेटिव मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टू ईच अदर, Correct. रिलेटिव टर्म्स टू ईच अदर. हम ये टॉपिक दोबारा भी करेंगे. रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन मीन्स मोशन ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर. करेक्ट. वी ए बी और वी बी ए. तो it is again relative. Relative means comparison with the other. Correct? सो बिकॉज हम बस में तो देख रहे हैं, तो फिर बस में तो जैसे वो रेस्ट में है, जैसे हम ट्रीज को देख रहे हैं, ट्रीज एक्चुअली हमें बस से तो रेस्ट में मूविंग दिख रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली रेस्ट में है, तो वो रिलेटिव हो सकता है ना उस केस में. नहीं, ये बट दोनों वो ट्री. हमारे रिलेटिव में हम स्टैटिक है और वो मूव कर रहे हैं. ओवरऑल बस मूव कर रही है तो वो बॉडी भी साथ में मूव कर रही है. राइट. ओके, तो तो उस हम मूविंग. रेफरेंस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहीं पे मैटर करता है ना. ओके सर. हाँ. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन वर्क डन करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है. क्योंकि अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दें कहाँ से स्टडी की, तो वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग हो जाएगी. कैसे? एग्जाम्पल, body was moving and reached to B point. What will be the value of displacement depend upon from where you are measuring, है ना? From where you are measuring. जैसे now you are studying for NEET. Tomorrow you get MBBS seat. तो ये डिपेंड करेगा कि हमने कहाँ से मेजर करना स्टार्ट किया, कितने ईयर का हार्ड वर्क है. इज इट कि ये लास्ट 40 डेज का हार्ड वर्क है, या इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट फ्रॉम लास्ट 2 ईयर तो ये 2 ईयर का हार्ड वर्क है, या फिर लास्ट 12-13 ईयर में जो हमने पढ़ा साइंस से रिलेटेड उसने हेल्प किया हमें टू अंडरस्टैंड बेटर, तो उसका हार्ड वर्क है. तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा ना कि कौन कहाँ से हार्ड वर्क मेजर कर रहा है. मेक सेंस? एनी डाउट? सो दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, बट फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. करेक्ट. So whenever we calculate work, because this chapter is about work, it depend upon the frame of reference. It depend upon the frame of reference. Why? Because displacement depend upon the frame of reference. We know SI unit is joule, CGS unit is ERG, and 1 ERG is equal to 1 centimeter square because it is CGS unit. CGS means distance measured in centimeter, mass in gram, and time in second. So 1 joule will be equal to 10 raised to power 7 earths. कमल, कमल वीडियो ऑन नहीं है. अच्छा है. तो कमल, यस अगर हम कंपेयर करें न्यूटन और डाइन को, व्हाट इज द रिलेशन? 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन? यू हैव टू राइट गाइस. जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, ये एक्स्ट्रा वो नोट डाउन करने हैं. 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन के बराबर होता है कमल? 1 लाख सर. करेक्ट. तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 डाइन और 1 लाख. 10 रेज टू पावर 5 डाइन और 1 लाख. अगर हमें वो पता है तो ये बहुत इजी हो जाता है. कैसे? बिकॉज वी नो कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 डाइन. 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 2 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो अगर दोनों कंपेयर करेंगे इट विल बी 10 रेज टू पावर 7. अब जैसे हमने मेजर किया था इन केस ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो चैप्टर है, उसमें हम मोस्टली वैल्यूज व्हाट वी मेजर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम देखते हैं तो वी फील लाइक कि ये तो वोल्ट की यूनिट है, पोटेंशियल की यूनिट है, बट एक्चुअल में क्या है?
चार्ज इनटू पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो ये एनर्जी की यूनिट है 1.6 × 10⁻⁹ इन वैल्यू इजी है, व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल टू दिस, बट यूनिट में प्रॉब्लम हो जाती है। दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल, करेक्ट, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और ये तो 10th क्लास में लाइक यू हैव स्टडीड कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलो इंटू 1000 वाट, 1 hour is equal to 3600 seconds if you multiply both of them. Any doubt? Correct. If we calculate power, rate of doing work by time, so work will be power into time. Power unit watt, time second. That's why work unit can be watt second, watt second, watt second. और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में you have this formula कि potential is equal to and work done on unit test charge. So what is the unit of energy or work done? Q into V. Q, instead of Q we have electron here, इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू दी। करेक्ट। अगर if we have angle 180, तो cos 180 वैल्यू इज इक्वल टू Nancy, cos 180 की वैल्यू क्या होती है? अनीता एंड निकी। Sir, So I just switched it off. Just a minute. ओके, नैन्सी, व्हाट इज cos 180 वैल्यू? minus cos 0 वैल्यू इज इक्वल टू 1, cos 90 वैल्यू 0, cos 180 वैल्यू -1, correct? Cos 180 value -1, because cos 180 value is -1, so if theta is 180, then work will be negative, correct? If theta is 0, which is cos 0 is equal to 1, that's why work will be positive. तो ऐसा हो सकता है कि दोनों केस में वर्क मैक्सिमम हो, बट एक वैल्यू नेगेटिव है, दूसरी वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, आई एम सेंडिंग यू पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर। बाई चांस इसमें कुछ इश्यू हो तो मैं, यू कैन सी क्वेश्चंस। पीडीएफ की वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर। सारा अनविता को अरे, I was supposed to call Anvita. Yes. So did you say something? No, I've sent PDF in the group to other people. I'll send personally. तो कुछ बोला आपने? हाँ, बरिंदर को एक बार कॉल करना, उसने बोला था कि सर आप जब टीचिंग स्टार्ट करो तो प्लीज मुझे एक बार। अच्छा देख, मैं करती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, मैं सबको पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, इन केस अगर किसी को कुछ इश्यू होगा यू कैन रेफर द पीडीएफ। नैन्सी, निकी, प्राची, निकिता, कमल। सबको मैंने ये पीडीएफ सेंड कर दी है। तो
I'm using same PDF for the question. She's not picking up. Okay. This is the introduction of vector. We already did vector work. So, Yes, Prasi. so can you share the notes PDF again? Screen. Yes, I sure, will take the screenshot of 1 to 2 slides. sure. अगर किसी का भी कोई टॉपिक छूट जाए तो मुझे बेझिझक बता देना. You can take screenshot. So starting portion. Yes. 1 minute, sir. Huh. Because in this topic, guys, I don't just write from the chapter. I write extra also. Extra for the revision. कि 12th भी रिवाइज हो जाए इसके थ्रू. Done, प्राची? So last second page. हाँ. Then Last page or sorry, sir. Last page. Okay, sir. Yeah. हाँ. So look at this question. Work energy power. This question. देखा अनमिता, आगे बरिंदर कॉल करने का असर. कई बार पास में नहीं होते तो लेकिन कॉल से पता चल जाता है कि अच्छा. Yes. तो बरिंदर, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइड, रिलेटेड टू वर्क. यूनिफॉर्म फोर्स दिस न्यूटन act on particle mass this. Particle is displaced from position this to this. Work done by the force in the particle is. जब when we are supposed to calculate work done in this case, we know it is force into. हेलो, नमस्ते बे.
Guys, how many questions you did? Why everybody's video is off? Anvita, Barinder, Kamal, So I'm Nancy, having breakfast. Prachi, Nikki, Tara. क्यों नहीं करो खाते हुए देखूंगी कुछ नहीं खा ले चाहिए Everybody बोलिए is there. Anvita, बोले तो सबको बैठ so if we see here in this question, so we क्या know बोल force value. dx means final हाँ value minus initial value. Final value is this. तेरा Example R2 minus R1. Correct? So what is R2 value? 4i cap plus हाँ कब 3j तक cap. करने एक चीज और कोई सुनने का सुबह सुबह पढ़ते पढ़ते ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो Prachi, Mike. सॉरी सर It's okay. So what is R2 value? 4i cap plus 3j cap minus k cap. What is R1 value? 2i cap plus k cap. If we take difference, क्योंकि हमें निकालना है R2 minus R1, we are supposed to calculate R2 minus R1. So R2 minus R1. So 4i cap minus 2i cap will be net 2i cap. 3j cap remains same, 3j cap. Minus k minus k minus 2k. Any doubt? This is your final dx value. If you know this, we calculated exactly same thing in your PDF also. Look at this. Force value given is this. R1, R2. Correct? R1, R2. So if you calculate total displacement R2 minus R1, this will be your final value. Then if you want to calculate work done is equal to force into displacement. What is the force value? This. What is the displacement value? This. Right? तो अगर हम देखेंगे इस केस में ज्यादा everything is so messed up, so I'll try to make it short. 6 3 multiplied by 2 is 6. This is what given written here. 1 multiplied by 3 is this, and 0 multiplied by 2 will become 0. And out total work done is 9. Why? Because in dot product I dot I or j dot j or k dot k will be equal to 1. Correct? Any doubt? But if you take dot product of I dot j or j dot k or k dot I, it will be 0. Why? Angle will be 90 degree and cos 90 value is equal to 0. Here angle is 0, cos 0 value is 1. Second, if you do integration, this is your integration formula. Integration formula, x raised to power n plus 1 divided by n plus 1. If you take 0, 0 plus 1 divided by this, it will be equal to, if you take x raised to power 1, it will be like this. We will use this in the integration purpose. Correct? Look at the second question. Anybody have doubt in this question? How we got 9 joule answer? Anybody have question? No, sir. Anvita, Kajal, Kamal. Clear, sir. So simple है. You have force. You need displacement. R2 minus R1. Simple multiplication and you get answer.
नैन्सी, Yes, sir. कोई डाउट इस क्वेश्चन में? No, sir. निकिता, No, sir. प्राची, No, sir. सारा, No, sir. वरिंदर, Yes, sir. कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? वरिंदर, No, अभी sir. वीडियो क्यों ऑफ है? अभी तो सामने ही रखना है ना, क्या बोलते हैं, फोन। सर वीडियो ऑन करनी है। हाँ, वीडियो ऑन करनी सर जरूरी है। है। मर्जी है। निकी, एनी डाउट? तो इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, तो या दूसरे क्वेश्चन को हम थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल। इन दिस क्वेश्चन, ए बॉडी इज मूविंग इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन मीन्स जे कैप, जे कैप, करेक्ट, is subjected to force is equal to this. What is the work done by this force moving through the distance 10 meter along y-axis? Remember, हमें पूरा नहीं चाहिए. We don't need everything. We need only in y-axis. We need only in y-axis. What is the force in y-axis? Plus 15j. What is the displacement along y-axis? Plus 10j, because y-axis na, plus y-axis. What is the work done along y-axis? 15 into 10, 150. बताओ, बहुत इजी था. Only y-axis. Okay, only y-axis. Done. Next question. Mass this, initial velocity this, strike the earth at same level with velocity this, work done in joule overcoming the resistance of air. If you calculate work done is also equal to half mv square kinetic energy. Half, what is the kinetic energy final minus initial? Correct? Half. What is the mass? 10 gram. If you convert into kilogram, divide by 1000. Well, what is the final velocity? 500. 500 का square 2540 minus 1000 square 60. Correct? 60. 1010 cancel. 60 means 10 lakh. 10. If you take this, give me 1 minute. हेलो, हाँ जी, नमस्कार. हाँ जी, ठीक है. अभी, हाँ जी, तो अभी बच्चा 12th क्लास पास करे है या ड्रॉप ईयर में है? प्रो है, मतलब 12वीं वो पास करी है लगभग. और नीट का भी फॉर्म भर दिया इस साल का. तो -0.7. तो अभी के लेवल नीट की तैयारी पहले करी है या शुरू करनी है? गुड़िया है आपके पास? तो एक बार आप मेरी बात करवा इसको. Guys, solve this question and let me know what is your answer. हेलो जी, नमस्ते. सो
Sir, option B is correct. Hello guys, sorry I got call. So all of you got answer? Sir, Anvita, B, B. sir. Sir, option B. option B, 2. Yes, sir. 2. Okay. Even I. Kamal, Anvita and Sara got 2. Kajal, Yes. क्या आंसर आया? Sir, 2, B option 2. तो नैन्सी, निकिता Yes, sir. 2, Yes, sir. काजल, बरिंदर and निकी. सर 2 ही है मेरा. ठीक है, तो सबका 2 आया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं. अब इस क्वेश्चन का बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला था. अगर हम ये करें कि वर्क इज इक्वल टू हाफ m v फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर v इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क. मास हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है. तो देख लेना कि आंसर कितना आएगा. मैंने भी इसको मतलब कैलकुलेट नहीं किया, इसको देखेंगे तो 1/200, बट आपका सबका इतना ही आया तो उतना ही होगा. 0.75, 75 इंटू 10⁴, 2 कैंसल, तो ये 37.5. हाँ, तो बी ही आंसर आएगा. ठीक है, तो वर्क में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा. 3 फैक्टर डिसाइड करेंगे फोर्स की अमाउंट कितनी है. फोर्स अलग अलग फॉर्म में दे कैन आस्क, इधर फोर्स इज इक्वल टू ma और फोर्स इज इक्वल टू dp/dt अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ना. क्योंकि हम फोर्स मोस्ट ऑफ टाइम तो हमें डायरेक्ट मिलेगी, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना इनडायरेक्ट फॉर्म में लॉज ऑफ मोशन से कोरिलेट कर. सो फोर्स इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू dp/dt, फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स बाय टाइम.
फोर्स इज इक्वल टू QVB, फोर्स इज इक्वल टू QE, है ना, वो सबको कोरिलेट कर सकते हैं. सो आई नोट इट डाउन, आई विल राइट ऑल दिस थिंग्स. पेस्ट होगा यहाँ पे, ग्रेविटेशन यूनिट, यहाँ पे स्पेस था, हाँ, यहाँ. सी, व्हेन वी आर सेइंग वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा. तो डिस्प्लेसमेंट तो अलग अलग वर्जन में नहीं हो सकती. सो मोस्ट ऑफ टाइम यू विल सी डिस्प्लेसमेंट इन द सेम वर्जन. थीटा यू नो, बट इफ यू वांट टू कैलकुलेट फोर्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नीड, तो फोर्स तो अलग अलग वर्जन में हो सकती है. फोर्स कैन बी मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स कैन बी dp by dt, force can be, because dp is equal to impulse by dt, force can be qvb sin theta in magnetism, force can be qe, correct, force can be mv square by r, correct, force can be mass into r omega square, is most of the thing we did in the last chapter, laws of motion. What else force can be? Force can be equal to mi mass into gravitation intensity, gravitation field intensity. Okay? Because gravitation field intensity is equal to force acting per unit mass. Example, how electric field is equal to force acting on per charge. So in electric field we have force per unit charge, in gravitation field force per unit mass. ठीक है, अगर if you correlate like this, अगर ऐसे correlate करोगे, then it will be to summarize everything. Understood? Because NEET ने अब तक easy question पूछे. NEET asks all the easy question, but in case if they change the method and they give magnetic field and velocity and charge, and then you have to calculate work done, and it will be challenging. Correct? So you need to know how are the different versions. Second, this is one type of question. Second type of question is area. Example this 2019. Solve this question. Force value is this. Act on the y direction. Work done by the force to move particle from y1, y0 to y1. Right? So you know work done is equal to force into dy, because y axis है. If integration करेंगे 20 will become 20y and 10 will become 10y square by 2. Integration of 20 is 20y and integration of 10y is 10y square by 2. इसमें किसी को doubt? Anybody have doubt in this? Any doubt, guys? No, sir. Now you can put the value of y. If put value y value 1, so 20y is 20 and 2 5 जा. तो क्या बहुत भारी सवाल था ये? Was it really difficult? So I'm First, switching off my video for 5 minutes. okay, but you are there, right? I mean, I'm eating soon. Okay, nice. So 25. Any doubt? What you did in this question? I am not bothered about the calculation. Calculation की टेंशन नहीं है. Here we have to do integration with respect to y. तो 20 का इंटीग्रेशन करेंगे. We have to do integration of 10y. Put y value is equal to 1 and get your answer. That very recent question, 2019. Next question. Object mass this, initially at rest. So initial velocity 0.
acted upon by variable force. Force is changing, whose x component vary in x manner. Velocity of the object at 10 meter and velocity at this will be. Velocity at 10, 8 and velocity at 12 between these two. What will be the velocity? See, if we calculate work done, it is the integration of force into displacement, which is equal to area under fx. Correct? If you calculate from x0 to x value 8, what will be area? Area of this and area of this. Correct? Area of this and area of this. Correct? So you have to calculate area of this one, A2, and you will get the answer. What will be the value of A1? Height 20, base 500. Correct? Second, height 10 and base 3. See, this is 3, this was 5. So, what will be the value? 30. Correct? So, if you add total area, it will be equal to 130 is equal to half mv square. What is the m value? मास दिया है क्या यहाँ पे? Half kg. Yes. So 130 is equal to 1/2 mass 1/2 v square. तो ये 4 इधर चला जाएगा. 4 130 v square. What will be v value? Under root of 4 will be 2. Under root of 130 कितना होना चाहिए? 11 के आसपास. तो 11 multiplied by 2 approximately 23. तो ये दोनों नहीं हो सकते. Any doubt, guys? What I did कि हमें निकालनी है velocity. We know work done is equal to area. Work done is also equal to half mv square. एरिया को मैं टोटल ऐड कर लूँगा तो मेरा एरिया निकल जाएगा. मास मुझे दिया हुआ है, वेलोसिटी मुझे पुट करके निकालनी है. मुझे A1 और A2 ऐड करना है. मास की वैल्यू 0.5 रखनी है और V की वैल्यू निकालनी है. कोई डाउट? If we want to calculate at 12, how to calculate this? First, हमें टोटल एरिया ऐड करना है सबका. A1, A2, A3, A4 टोटल एरिया. तो वर्क डन विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A4. अब मैंने माइनस A3 क्यों लिखा? बिकॉज नेगेटिव में है. ये वाला पार्ट नेगेटिव में है और ये किसके इक्वल होगा? हाफ एम वी स्क्वायर. मास तो फिक्स ही है, हाफ के जी. वी स्क्वायर हमें निकाल. और जब हम इसका एरिया निकालें, when we calculate this area, so there will be two part in this region, in this area. First part is this. Second part is this. Okay, so this will total area will be A3 and this total area A3 will be in minus क्योंकि axis के नीचे. Any doubt, guys? तो क्योंकि अगर मैं इसको लॉजिकली सॉल्व करूँ ना तो ये एरिया कम हो जाएगा. Why it will be less? Because A3 is minus. तो कम हो जाएगा तो वैल्यू इससे तो कम ही आएगी. ये तो हमें करना ही है कि प्रॉपर इसको कैलकुलेट करें. ये तो बेटर मेथड है, लेकिन अगर इसको शॉर्ट करना है
तो एरिया कम होगा क्योंकि A3 नेगेटिव में है, तो आंसर डी आएगा। सो गाइस टेल मी, समझ में आया और इज इट टू डिफिकल्ट? स्टार्ट फ्रॉम द बैक साइड। निकी, मैं एक बार सॉल्व कर रही थी क्वेश्चन अभी जो दिया ठीक है। था। वरिंदर, Yes, sir. समझ में आया अच्छे से? Yes, sir. अनविता, शी इज ईटिंग। सारा, अंडरस्टूड? Yes, sir, understood. Sarah, every day you change your place. What is the Now reason? my uncle has come, sir. That's why I can't use that room. Okay. प्राची, समझ में आया अच्छे से? आ तो गया समझ में, पर सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं दूसरा मेथड यूज करती, तो आप अपना मेथड रिपीट करेंगे एक बार सर भाई, ठीक और है, रिवाइज। मैं बिल्कुल रिपीट करेंगे। निकिता, Sir. समझ में आया अच्छे से? Yes, sir, आ गया। नैन्सी, No, sir. क्या इतने दुखी मन से No, बोल रही हो, sir. नहीं आया क्या? No, sir. ठीक है, समझाएंगे दोबारा। कमल, क्लियर सर। काजल, यस सर, आ गया। तो नैन्सी, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, मैं इसको सेपरेटली इस पीडीएफ में लिख लेंगे। मैं कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा अब, बस आई टेल यू कि हम इसको करें कैसे कि क्विकली हो जाए। जैसे इफ you understand this basic concept कि work done is equal to force into displacement, it means area of this work done is also equal to half mv square. Okay. Second, if we calculate here, then what will happen? Area, if you calculate from, this is 5, this is 8, तो पहले केस में अगर हमें वर्क डन 1 निकालना है तो हमें ये एरिया लेना पड़ेगा, 1 एरिया, एंड देन वी हैव टू टेक अनदर एरिया ऑफ दिस। इन दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा वर्क डन का एरिया आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। नैन्सी, इसमें कोई डाउट? No, sir. सेकंड, अब अगर हमें सेकंड पार्ट निकालना है 0 to 12, तो हमें क्या देखना पड़ेगा? 0 to 8 तो सेम ही है, 8 to मान लो 10 है, यहाँ पे 8 to 10 ऐसे है, और ये माइनस में है, बिलो एक्सिस है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, करेक्ट? तो जब हम सेकंड वर्क डन निकालेंगे तो A1 पॉजिटिव में होगा, A2 भी अबो एक्सिस है तो पॉजिटिव में होगा, A3 नेगेटिव में होगा, और A4 12 तक है, ये पॉजिटिव में होगा। तो वर्क डन कैसे आएगा? A1 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A4, और जो टोटल वर्क डन आएगा उसको हाफ एम वी स्क्वायर के साथ फिर से पुट ऑन कर। अब बताओ कोई डाउट? No, sir. नो सर, नो डाउट। समझ में आया दोनों को, प्राची एंड नैन्सी को? नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आगे है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स एनी क्वांटिटी दैट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव क्वांटिटी। ओके, एग्जांपल,
Barinder, I was talking about स्टेट फंक्शन इन थर्मोडायनामिक. थर्मोडायनामिक में हमारी बात हो रही थी स्टेट फंक्शन के बारे में. तो स्टेट फंक्शन भी ऐसे ही होते हैं. इट मींस इट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना, पाथ पे डिपेंड नहीं करते. तो उसको हम स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं और कंजर्वेटिव नेचर भी बोलते हैं. वर्क डन भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है. इसका मतलब इट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ. एग्जाम्पल, if you go from A to B by path A, path B and path C, in all the three condition, work done will be same. क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा. सेकेंड रूल कि तीनों केस में डिस्प्लेसमेंट सेम है. तीनों केस में डिस्प्लेसमेंट सेम है. अगर डिस्प्लेसमेंट सेम, फोर्स सेम, तो वर्क डन भी सेम. तो वेरी वेरी सिंपल. सो ग्रेविटेशन फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज लाइक दिस, है ना. अगर हम एक राउंड सर्कल में लेंगे तो राउंड सर्कल में वर्क डन जीरो होगा नेट. वाई वर्क डन इज जीरो? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. एक राउंड सर्कल में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो वर्क डन भी नेट जीरो. इट मतलब ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाले फ्रॉम ए टू बी लाइक दिस एनर्जी हो 100, तो नीचे वाले में क्या होगा? -100. तो ऊपर वाला +100, नीचे वाला -100, नेट क्या होगा? जीरो. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है ऐसा फोर्स जो पाथ पे भी डिपेंड करता है. अगर ऐसे केस में अगर हम देखेंगे तीनों में वर्क डन सेम नहीं होगा. क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ डिफरेंट है. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में फ्रिक्शन के केस में ऐसा होता है. विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग फोर्स, जब हम फ्लूइड की बात करते हैं, फ्लूइड में विस्कोसिटी की बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट दिस. एंड टेंशन, ऑल दिस फोर्स डू नॉट रिमेन सेम. एग्जाम्पल, हमें पता है कि इन केस ऑफ फ्रिक्शन force is acting in the right hand side, friction in the back side, and if friction is more, then body will not move, then work done will be zero. Okay, body will not move. We are already done with this topic in the last class, last chapter. Next, if you apply force and your force is more and body start moving, in that case work done by friction will be negative. Why? Direction is 180, sorry, angle is 180 backward direction. That's all. Third situation, if you apply force on A, like this, friction is acting in the backward direction. Displacement will occur in the forward direction. And friction in B is acting in the forward direction. Both have same direction. That's why work done will be positive in B and negative in case of A. With doubt, confusion, let me know. सब सही जा रहा है कि Yes, sir. if friction and displacement have opposite direction, so negative. Displacement and friction have same direction, positive value. No movement, zero value. Done. No movement, zero value. Sara, tired ho? Are you tired? No, sir, no, sir. Okay. तो ये क्वेश्चन हम अभी नहीं करेंगे. कम टू द एनर्जी. एनर्जी मीन्स वर्क. एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, सेम यूनिट. मैकेनिकल एनर्जी हैव टू कंपोनेंट, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. 1 जूल इज इक्वल टू दिस, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस, 1 कैलोरी इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 4.2 जूल. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल और 1 किलोवाट आवर. हम ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं. काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होता है. काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला इज दिस. काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड बिकॉज वर्क डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. कोई डाउट इसमें? क्योंकि दिस इज द वेरी बेसिक थिंग, तो मैं इसको तो नहीं टीच करूंगा. एग्जाम्पल, बुलेट का मास, यू हैव सम मास m, speed this, so you have m value here, you have v value here.
plywood thickness is this. Bullet emerged from with 10% of its initial kinetic energy. What is the emergent speed? तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी निकालें. We will calculate normal kinetic energy. Kinetic energy is equal to half mv square. हाफ m वैल्यू रखेंगे हम 50 ग्राम और 50/1000 इन किलोग्राम, एंड वेलोसिटी हमें दी है 200 का स्क्वायर. वैल्यू निकाल लेंगे. जो भी वैल्यू आएगी सेकंड काइनेटिक एनर्जी की उसका 10% होगी, है ना. 0.1 टाइम ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेकंड, क्योंकि इसने बोला है कि सेकंड काइनेटिक एनर्जी कितनी है. तो आपको स्पीड निकालनी है, मास तो सेम ही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी आपके पास है, यू कैन कैलकुलेट सॉल्व दिस. Note down the values. Mass 50 gram, speed 200, thickness displacement 2 centimeter, final kinetic energy 10% of initial kinetic energy. Calculate speed. Solve करो जल्दी से. How many people left? Okay. Anvita is not there. You can check again. अगर कुछ वैल्यू मिस हो गई तो tell me your answer. निकिता, निकी वीडियो. Sir, what is the value of V here? 200 meter per second. Mass 50 gram, velocity 200 meter per second, and displacement 2 centimeter. Final kinetic energy 10% of initial kinetic energy. Find out your answer. Send me in the chat box. K1 K2. Okay. तो निकी K1 K2 निकल गया है. Now you have to calculate final velocity. Yes, Sarah. You got K2. Now find out velocity.
K2 Nancy, okay. Nikki, okay. Nikki, I think V स्केयर मिला है आपको, V निकालना है. नैन्सी क्या हुआ? Nothing. Okay. Nikki, let's see your video. Sir, how to find velocity here? Velocity जो भी K2 की वैल्यू निकलेगी, this will be equal to half mv square. Sara, you got answer? So just a Okay. Kajal, सर क्या नहीं आ आंसर रहा. आया? ठीक है. Look at this. Initial velocity when you calculate half mv square, you Sir, is got it 10? 1000. It, it will be under root of like 400, 100. Sir, it is will be under 20 under root 10. 20 under root 10. So initial kinetic energy is equal to half mv square. Mass given is 0.5 because no 50 gram, and you will get this answer of initial kinetic. We said final and kinetic energy is 10% of initial, so you all of you answer 100 joule. This is equal to half mv square final velocity. We know mass value 50 gram. We can calculate v square 4000. If v square is 4000, we need to calculate v. Done. Correct. Done. One more thing. We did this question. Work done is equal to force into displacement. Force is equal to mass into acceleration. Acceleration is equal to dv by dt. Correct. So dx by dt, this dx by dt is equal to v mv dt. अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, if we do integration, we'll get half mv square. Work done is equal to half mv square, and your final work done is equal to v2 minus v1 or k2 minus k1. इसको ऐसे भी लिख सकते हो. You can write like this. It will be equal to k2 minus k1. k2 minus k1. फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक. यही तो होता है वर्क डन. और जब आपने निकाला था क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का, when you calculated this question answer,
So you know work done was equal to final kinetic energy and initial kinetic energy. Correct? हमने यही तो फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे. वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. यही तो था. काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी. बस इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क को एनर्जी के साथ कोरिलेट करना. रिलेशन ऑफ वर्क विद द एनर्जी. वर्क इज डब्ल्यू, एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. तो वर्क एंड एनर्जी रिलेशनशिप. वर्क एनर्जी रिलेशनशिप. करेक्ट. वर्क एनर्जी रिलेशनशिप. Solve this question. Toy rocket mass given. Fuel mass this. Burn out with this speed. dm by dt is given. This value is dm by dt. Start from rest. Initial velocity 0. Now final speed this 20. Rocket thrust you have to calculate force. Thrust means force. Energy content per mass. Total energy by mass. अगर इसमें हम क्वेश्चन निकालते हैं force is equal to mass into acceleration is equal to final velocity minus initial velocity by time. Right? Mass value is 0.1 gram, that's why 1 by 10. Final velocity is 20, initial velocity 0, so it is 20. Time 3 seconds. तो हमें मिल गया force. If we know force, kinetic energy is equal to half mv square. Half m 0.1 and velocity 20. तो हमारी एनर्जी आ गई this. If we know kinetic energy, we know mass. So what will be the value? Total energy by total mass. What is total energy? This. What is total mass? This. Why this? Because मैंने 0.02 को ऐसे लिखा है. इसका मास कितना था? 0.02. उसी को मैंने ऐसे लिखा है 2/100. टोटल एनर्जी तो 20 ही थी ना. बाय टोटल मास 0.02, तो 0.02 को मैंने ऐसे लिखा. एनीबडी हैव क्वेश्चन? Anybody have question and doubt from this? सर एक बार उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है सर. बिल्कुल. हो गया सर. So tell me one thing one by one. नैन्सी कैसा जा रहा है ये टॉपिक? इजी है, मीडियम है, टफ है, बोरिंग है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है सर. मजा आ रहा है. क्वेश्चन हो रहे हैं तभी मजा आता है. निकिता? Yes, sir. बोरिंग है, मजा आ रहा है, इजी है, टफ है? सर ठीक है, अच्छे हैं, इजी कोई है करने के बाद. करने के बाद दीजिए, बस ये थोड़ी आदत नहीं है. हाँ. हाँ. सारा एंथनी? इजी सर. बरिंदर कौर? सर इजी. निक्की सहारण? सर इजी है. प्राची देसाई? सर प्राची? इजी है. हाँ सर वैसे देखो बात क्या. हाँ सर बोलिए. वैसे सरनेम मेरा दांगी है वैसे. डांगी. आई थिंक. हाँ प्राची डांगी. ओके. तो पॉइंट ये है गाइस कि थोड़ा सा पेशेंस, लाइक यू हैव टू शो पेशेंस. इन द बिगिनिंग एवरीथिंग will not be like best and like you do all the question perfectly, but if you show patience and stay long, after 10-15 days you will see huge difference कि हाँ क्वेश्चन हो रहे हैं. You can see the difference. Example Sarah, like when you started class, what was your condition?
Sir, I was not that good at it, but now it's become easier. Now it is getting easier day by day, right? The moment Yeah, you sir. started, like I was doing 11th class for you, and you were preparing for the board, then definitely all these content were difficult for you and new Yeah, thing. yeah, sir. But now same thing look like, oh, I know this, I did this before. Right? Yes, So sir. this is the advantage you are getting compared to any other student. Example नैन्सी और निकिता, और कोई है निकी। तो जैसे तुम लोगों अभी 12th जस्ट कंप्लीट किया है, ठीक है, तो ये चीज बहुत नई लगेंगी, और मतलब गैप आ गया ऑलमोस्ट 1 ईयर का, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगने लगेगा, अच्छा बहुत गैप हो गया। सारा भी 12th क्लास में थी, मतलब आपके लेवल पे, एंड शी ऑल्सो वांटेड टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड, एम आई राइट सारा? The Yes, moment you called me, like it was more about the board key, you can get better in the board. yeah, sir. But one thing कि she was like, वो हमेशा ये था कि हाँ ठीक है सर, अगर आप 11th का भी करवा रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड के टाइम में भी। इवन 10 days बोर्ड से पहले भी वो नीट का पोर्शन कर रही थी, और बोर्ड का प्रॉपरली नहीं किया। उसका बेनिफिट अब मिल रहा है 3 महीने बाद, है ना? तो ये बेनिफिट होता है जब कांस्टेंट टच में होते हैं, तो चीजें आसान लगेगी। अब पहली बार में रीडिंग में दिक्कतें आएंगी, बट स्लोली यू विल फील कि चीजें अब आसान लग रही हैं, अब उतनी भी डिफिकल्ट नहीं थी। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द पेशेंस की टिकी रहो। ठीक है, बरिंदर से जैसे पूछ रहे थे, बरिंदर जिस मोमेंट पे फर्स्ट क्लास अटेंड की थी, कैसी सिचुएशन थी? सर ठीक है। और अभी कितना डिफरेंस है? सर अभी डिफरेंस है बहुत। तो वो इस मेन रीजन यही है ना कि शुरू में हर चीज समझ में तो नहीं आई होगी, है यस ना? सर। दिक्कतें तो आती होगी, लैंग्वेज का भी बैरियर था कि सडनली हर चीज इंग्लिश में करवाई जा रही है, हमें आदत होती है हिंदी में पढ़ने की, मतलब स्टडी का कंटेंट चीजें समझ में आ जाती, लेकिन एग्जाम्पल सारा, यू हैव हैबिट टू रीड एवरीथिंग इन इंग्लिश, राइट? So you are comfortable with that. If anybody start teaching you in Hindi, so you will feel weird. You can understand though, but you will feel weird, isn't it? Sir, I understand Hindi also, so I'm okay with both. You are okay with both, but the Uh, kind of habit you have, like from it the was more. beginning, from learning in English and then suddenly somebody teach you in Hindi, so it's weird combination. You can understand Yeah, everything. yeah. तो बरिंदर तुम्हारे साथ भी यही हुआ कि मतलब इंग्लिश तो सब समझ में आती है, बट बात ये है कि इंग्लिश में सारा कंटेंट सुनने की आदत नहीं है ना? ये थी ना शुरू में आदत। यस सर। बट गाइस, बरिंदर ने पेशेंस रखा, और पिछले लगभग कितने 8 महीने हो गए होंगे बरिंदर हमें कंटिन्यूअस टच में, 7-8 महीने। यस। तो उसका डिफरेंस ये आया कि अब उसमें भी कंफर्टेबल है, और साथ में ये भी हो गया कि हाँ, अब चीजें आसान लगने लगी है क्योंकि रिवीजन कई बार कर लिया। और मुझे लगता है कि एनीबडी हु इज टेकिंग क्लास थ्रू ऑनलाइन, दे वांट टू डू दिस, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चॉइस है, मजबूरी नहीं। और अगर बच्चा ऑनलाइन क्लास में अच्छे से पढ़ रहा है, इसका मतलब वो है कि वो टारगेट फिक्स है कि वहां करना है, और वो एफर्ट भी दिखते हैं, बस ज्यादा मोटिवेशन हो गया। इट्स 12:07, तो लेट्स टेक ब्रेक। तो यू विल हैव स्टडी सेशन एट 12:30। निकिता, तुम्हारा एग्जाम है कल हिंदी का? यस सर, हिंदी का है। ठीक है, तो अभी 12:30 पे क्लास ज्वाइन करनी है, और ठीक उसमें है। हिंदी पढ़नी है, ठीक है? और मतलब जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से अपना रीड कर सकते हो, बस ये है कि वो 2 घंटे स्टडी सेशन के होंगे, तो पढ़ाई अच्छे से होती है। ठीक है ठीक सर। है, तो मैं पूछूंगा कि कितना कंटेंट पढ़ा, तो एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है गॉट सर। इट?
And Sarah, you have to do some question of laws of motion also, and along with this topic, because almost 50% of the part is done. Majority part of the work energy done, work energy power. Main thing we are left with is collision. Collision ही main topic है जिससे question permanent आते हैं, ठीक है? Barinder, same thing. Your task is to do question from this PDF. I have sent this PDF in group. निकी, ओके सर। समझ में आ रहा है या थोड़ा ज्यादा लग रहा है कि सर अभी ब्रेक ज्यादा हो गया? निक्की सारण ये है क्या यहाँ पे? प्राची, हाउ इज इट गोइंग? सर सब अच्छा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन सर अब मैं क्लास लीव कर दूँ, मैं थोड़ा स्पेक्स थोड़ा कोई इशू है ना, इशू काफी देर से स्क्रीन टाइम हो गया सर। हाँ, तो उसमें all of you can use glasses for that, and now you have half an hour break. तो उसके बाद हम will continue with the study session. ओके सर, 12:30। हाँ, 12:30 study session. ओके ओके सर, Okay, guys. Bye. Thank you, sir. Okay. थैंक यू सर। Okay.